हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऑल के बटन पर क्लिक करें जिससे हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैंने गले की चौड़ाई 2.5 की है, वहाँ पर मैंने निशान कर दी है। और मेरे ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच और मेरे ब्लाउज के गले की लंबाई है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर निशान करेंगे। अब कैनवास लेके उसको डबल फोल्ड कर दीजिए और उस पर गले से गले का निशान लगा दीजिए। नीचे की साइड डाइस का निशान करके ऊपर तक लाइन खींचिए। नीचे से 3 इंच लेके निशान कीजिए। और साइड में 1 इंच पर निशान और शेप बना साइड में 1 इंच का निशान और नीचे की साइड 2 इंच का निशान कीजिए। नीचे से मैंने किया है उसे निशान करके शेप बना लीजिए। कॉन्ट्रास्ट कपड़े पर वो कैनवास रख के उससे सिलाई की मार्जिन छोड़ के कपड़े को काटना है। अब कैनवास की पट्टी के लिए 1 इंच की थोड़ी पट्टी काट लीजिए। अब ये कपड़े पर रख के कैनवास को ज्वाइन करके पट्टी बना लीजिए। अब
जैसे सिलाई कर रही हूँ वैसे देख के वीडियो में देख के आप सिलाई कीजिए। आपको कोई भी पैटर्न या कोई भी दिक्कत हो पैटर्न में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम कमेंट में आकर आपको उसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई और डिजाइन भी सीखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसका वीडियो भी लेके आएंगे। अब जैसे मैं सिल रही हूँ वैसे ही आप देख लीजिए। गले की पट्टी को ऊपर रख के पिन अप कर दीजिए और उस पर सिलाई मार दीजिए। बनाने के लिए अस्तर को नीचे रख के उस पर सिलाई मार के पलट दीजिए, जिससे उसका फिनिशिंग अच्छा रहेगा। नीचे की बटन में ब्लू कलर का कपड़ा लेके पाइपिंग बनाएंगे, जिससे अपने पेज का गेटअप अलग आएगा।
वो ब्लाउज के गले के साथ मिक्स कर दें। हमारे कोई भी चीज़ आपको पता नहीं चलती हो तो उसका आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम उसका सॉल्यूशन भी कमेंट बॉक्स में आके देंगे और लाइव भी आकर आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं।